complete. All right, so let's begin. So we did a few questions on this in the last session already. That was yesterday. So we did the first 4 questions from this. Okay, वो हमने कर लिए थे first four questions. We will move on from that, and we will do questions 5 onward from this paper. Okay, so let's start with this. So we have AC and BD that are diameters of the circle. AC and BD that are the diameters of the circle. The center is O, and AC is given to be 12, and AOB is given to be 130 degrees. AOB आपको angle दिया हुआ है और आपको AC यानी कि diameter भी दिया हुआ है circle का, that is 12 centimeters. सबसे पहले it says calculate the area of the triangle AOB. Triangle AOB का area calculate करना. Okay. Now let's think about this. AOB के अंदर हमारे पास क्या information है? We know that this angle is 130 degrees. AC is the diameter, O is the center. Since AC is the diameter, that means AO is the radius, right? AO kitna hoega? This is going to be 6 because 12 is the diameter, 6 is the radius. So this is 6, this is also 6, this is also the radius. Now in AOB, you've got 2 sides and you've got the angle between them. So you can just apply that formula, half into AB sine C, so half into 6 into sine of the angle between them, that is 130 degrees. Right? You just apply this formula and you'll get the result for that. That will be the area of the triangle AOB. So let me get my calculator to do these calculations myself as well. So what do you get from this? (18 into sine of 130. Into sine of 130. This is 13.8. Okay, so मेरे पास आ जाता है 13.8. That is the area of this triangle, 13.8 centimeters square. Okay, अच्छा. Let's move on. Part B. Calculate the area of the sector AOD. Okay, sector AOD. We're talking about this sector here. AOD, इसके अंदर, if this angle is 130 degrees, what is the remaining angle here? It's a straight line. Straight line का angle 180 होता है. 180 से 130 minus किया, we get 50 degrees here. Okay, so we get 50 degrees here. AOD angle is 50 degrees. Now we have to calculate the area of this sector. इस पूरे sector के area निकालना है. Sector के area का formula क्या होता था? It was theta over 360 multiplied by pi r square. What is the angle for us? The angle is 50 degrees. So that's 50 divided by 360 multiplied by pi into radius, that is 6 square. And that will give you the area of the sector. Just evaluate this 50 over 360 multiplied by pi into 36. And that is 15.71. So that's 15.7 here. That is the area of the sector AOD. ठीक है, हमारे पास triangle का area आ गया और हमारे पास sector का area आ गया. Now it says calculate the percentage of the area of the circle that is shaded. Percentage that is shaded. Shaded area के percentage निकालनी है. Let's go back there and see which parts are shaded. So you've got, so of the circle की बात करें, total of the circle है, circle का कितना percentage part जो है that is shaded. You've got one triangle here, right? This is one triangle that is shaded. You've got another triangle here that's equal to that. ऊपर वाली जितनी triangle वो है. नीचे भी देखें वही angle बन रहा है. This is also 130. Vertically opposite angles. This is 6. This is 6. So therefore, both the triangles have equal areas. So जो ऊपर वाली नीचे वाली triangles हैं, they have the same areas. Now, if they have the same areas, इनको तो multiply कर लेते हैं, right? So shaded area निकालते हैं पहले. Shaded area, that is basically 2 times the area of triangle AOB. AOB triangle जो ऊपर वाली है उसको 2 से multiply कर दें, एक वो आ गया.
that's 2 times area of triangle AOB. इसमें क्या ऐड करना है? You need to add the areas of these segments here. जो AD segment है, तो इतना पॉइंट है, इसका एरिया, और इसमें ऐड करेंगे ये वाला एरिया. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये दोनों एरियाज हमें चाहिए. ठीक है, सेगमेंट के एरियाज चाहिए. हाउ डू वी फाइंड दोज एरियाज? लेट्स थिंक अबाउट दैट नाउ. तो पहले उस सेगमेंट का निकाल लेते हैं. मैं शेडेड पार्ट को नीचे ले जाता हूं यहाँ पे. What about the area of that segment there? What about the area of that segment? ये जो ये वाला segment है, इसका area can come from the difference of the area of the sector and the area of this triangle. जो AOD triangle है, इसको माइनस कर देंगे सेक्टर के एरिया से, हमारे पास इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. So let's find the area of that segment. Area of segment AD, ये जो AD पे आपका सेगमेंट बन रहा है, let's find that area. How would you find that? That's equal to area of the sector. Area of sector. कौन सा वाला sector? That's OAD या AOD minus the area of triangle AOD. ठीक है, उस सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दिया, हमारे पास ये शेडेड पार्ट बच जाएगा. अब सेक्टर के एरिया तो निकाला हमने पहले, that was 15.71. So we already have that 15.71 minus the area of the triangle. ट्रायंगल के एरिया क्या है? अगेन हम वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, half into these two sides. This is 6, this is also 6, और इसके दरमियान वाला एंगल 50 degrees. So we say it's half into 6 into 6 into sine of 50 degrees. यहाँ से हमारे पास क्या होगा? Area of segment आ जाएगा. So let's evaluate that. This turns out to be 1.919 for me. So this total turns out to be 1.919. ये area of segment आ गया. अब total shaded area कैसे आएगा? That's 2 times the area of the triangles plus 2 times the area of segment AD. ठीक है, क्योंकि जो ये सेगमेंट का एरिया था, उतना ही सेगमेंट का एरिया आपके पास ऑपोजिट साइड पे, इस साइड के ऊपर BC सेगमेंट है, इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. So what do we get? We get 2 into area of the triangle AOB. What was that? That was 13.8 plus 2 into area of segment, that is 1.919. ये हमारे पास आ गया the total shaded area. Okay, so this is going to be 31.44. So this area is 31.44 centimeters square. Okay, now you have to find the percentage of the area of the circle that is shaded. Area of circle कितना है? Let's figure that out. Area of the circle, that is pi r square. That turns out to be pi into 6 ka whole square. That's 36 pi, which is 113.1 centimeters square. ठीक है, ये आपके पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया. So percentage of the shaded area, what is that going to be? Shaded area का area, that's 31.44 divided by the area of the whole circle, that is 113.1 multiplied by 100%. And that will give you the percentage of the area that is shaded, and this turns out to be 27.8% for me. So that is the percentage of the area of that circle that is shaded. That's 27.8%. Is this okay? Any questions on this? Any problems with this? You clear?
Okay, good. So let's look at the next one. Okay, so Zara fences off a piece of land next to a wall to make a vegetable garden. So ये एक wall है, उसके साथ जो है there is a piece of land. So this is fenced off, यानी इसके ना border बना दिए. यहाँ पे देखें, ये fence बना दिए for a vegetable garden. And the garden is a rectangle with the wall as one side of the rectangle. तो एक side पे आपके पास wall है और area of the garden is going to be 18 square meters. The width of the garden is x meters, so this is x. The area is 18. The total length of the fencing required for the garden is y meters. Show that y is equal to 2x plus 18 over x. Okay, now think about this. आपके पास अगर ये length x है, तो इसकी opposite length कितनी होगी? That's also going to be x, right? What about the length here? Now you're given that the area of the garden is 18. That means if you were to consider this length here as L, length ko L keh dete, this was L here, that would mean that L into X, that's the area of the rectangle, right? Length into breadth, length aapki ye L hai, breadth aapki X hai, that should equal 18. So length aapki kitni aa gayi? That is 18 over X. All right. So now the total length of fencing that is required for the garden is y meters. अब एक साइड पे तो वॉल है, right? ऊपर वाली साइड पे तो वॉल है, तो वहां पे तो फेंस करने की जरूरत नहीं है. You only have these three sides. You've got this L, you've got this X here, and you've got this X here. Just add all of them up, and that will give you the total length of that fencing. So y से represent क्या हुआ? So that's basically y equal to x plus x plus 18 over x, and you simplify this, you get 2x plus 18 over x. ठीक है, ये आपको शो करना है. So y उसने कहा हुआ है कि total fencing की length कितनी है? We've got x here and x here and L here. Okay. Let's look at the second part. Complete the table for y equals 2x plus 18 over x. So you've got this equation. इसका एक टेबल है, नीचे दिया हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है. x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी? That's going to be 2 plus 18, that's 20. When x is equal to 2, x equal to 2 इसके अंदर इनपुट कर दें, देखें क्या आता है उसके ऊपर. Okay, so last part of A. So you understand how we calculate the length, right? Now y से उसने represent किया हुआ है the total length of fencing that is required. So basically ये आपके पास vegetable garden है, इसको fence किया है सारी side से. On one side we already have a wall. We don't have to fence that. So all we are doing here is we're just adding the other three sides because there's fencing required here, here, and here, right? So बाकी length क्या है? You've got x here, you've got L here, and you've got x here. You just add all of them up. So basically हम यहाँ पे क्या करें? We're doing y equals x plus L. L की जगह हमने 18 over x डाल दिया. So that's x plus 18 over x. That gives us 2x plus 18 over x. Is that okay? Is that okay? Okay, good. Now let's look at this. So now we've got this equation y equals 2x plus 18 over x. We have a table given. यहाँ पे कुछ values of x हैं, कुछ corresponding values of y हैं. The table is filled for most of the values, लेकिन कुछ values missing आपको वो fill करनी है. x की value 2 input करें इसके अंदर. लेकिन क्या आता है? You have 4 plus 18 over 2, that's 9 plus 13. 4 plus 9, 13 आ जाएगा. इसके अंदर 9 input करेंगे, क्या आएगा? You get 18 plus 2, and that's 20. So 9 के ऊपर 20 आ जाता है. So these are the values that we have. So उसके बाद वो कहते हैं on the grid below draw the graph of this equation of this function. So graph draw करना है from x equal to 1 to x equal to 9. ठीक है? So यहाँ पे क्या करूँगा? I'll just copy this table here so that we can have that visible while we are plotting the points. So these are the points that we have. Just have to plot them.
then join them with some curve. So when x is 1, we've got 20. X1, we've got 20. Y, so that's 1 point here. X equals 2 and y 13, that's here. So keep in mind, do notice कि आपके पास scale दोनों axes के ऊपर क्या है. On the x-axis, you've got 10 boxes being represented by 2 units. एक छोटा box कितना represent कर रहा है? One small box is representing 0.2 units. On the vertical axis, one small box is representing 0.5 units. So basically 5 को 10 से divide कर दिया, you get 0.5. 2 को 10 से divide कर दिया, you get 0.2. छोटे boxes इतना represent कर रहे हैं. Okay, so you should keep that in mind while you're plotting the points. So 2 and 13, that's going to be here. Then 3 and 12, that will be here. 4 and 12.5. That's right here. 5 and 13.6. That's here. 6, 15. 7, 16.6. So 16 and 6 almost. 8 and 18.3. This is 18. That's here. And then finally we've got 9 and 20. 9 we've got 20. Okay, so this is our, these are all the points plotted. Now you just join those points using a smooth curve. So just try to make it a bit smooth. So you make something like this. Say, it may take a few attempts, so make sure you do this using a pencil. Okay, so yes, like this. So this is what the curve looks like. Okay, yeah, draw करनी थी, the points plot करके you just have to draw this graph, and we're done with that. Okay, so we've plotted this graph here like this. A bit more accuracy there. So it's going to look something like this. Okay, so that's our graph. Achha, ab uske baad, it says use a graph to find the two possible widths of the garden if 14 meters of the fencing is used. So use a graph to find the two possible widths. Widths की बात करें, देखिए width किससे represent हो रही है? If we go back there, width was basically x. So वो कह रहे हैं two possible values of x of the garden if 14 meters of fencing is used. 14 meters of fencing, उसने कहा था fencing किससे represent किया हुआ है? Y से. So basically, this is y. So when y is 14, you have to find the values of x. Okay, y 14 kahan par hai? You go to the y-axis, y is 14 here, and you read the values on the graph. So you've got 1 point here, 1 point ये आ जाता है, और दूसरा 14 के ऊपर is this point here. Okay, and that is right here. Just write those two values down here. So that's 1.8 meters. एक ये हो सकता है और दूसरा आपके पास हो सकता है 5.4. So that is the other value that we get. ठीक है, so आपको देखना है वो किन उनसे उसने इन चीजों को किन variables से represent किया हुआ. So width was x and fencing was y. It's just asking you for the values of x when y is equal to 14. Right? So they are 1.8 and 5.4 from our graph. So then it says the fencing costs $20 per meter. $20 per meter. Find the minimum amount it will cost Zara to build the fence. Okay. Now, minimum amount it will cost Zara to build the fence. अच्छा देखें, $20 per meter अब आपकी कॉस्ट है. अब फेंसिंग जो है
वो कहाँ पे आ रही है? Fencing is on the y-axis here. Y-axis के ऊपर you've got your fencing. ठीक है, आपके पास y जो है that is representing the length of the fencing. अब fencing का minimum number कहाँ पर आ रहा है? Where is the minimum fencing that you have here? आपके ग्राफ के ऊपर minimum fencing किधर आ रही है? That's around this point here. That is, so यहाँ पे ग्राफ जो है यहाँ पे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा. अच्छा, यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए इस तरह की ना. आपको फॉर एग्जांपल you need the minimum point on the graph here. You need the minimum point on the graph. You just want to check, is the curve going to go below this point or not? ये 3 के ऊपर जो 14 वैल्यू थी, is the curve going to go below that or not? So यहाँ पे तो अभी तो पहले हमने अंदाजे से बनाया था. Since you have to use this value now, आपको minimum amount of fencing, minimum length of fencing आपको चाहिए. So आपको क्या करना चाहिए? आप यहाँ पे check कर लें, is the graph really going to go below this point here or not going to go below this point? So the way to do that is, आपको 2 के ऊपर value पता है, 2 के ऊपर it's 16. 2 के ऊपर 13, sorry, 2 के ऊपर it's 13, right? 2 पे the value is 13, और जो है आपको 3 के ऊपर value पता है. 3 के ऊपर this is 12, right? 3 के ऊपर 12 है. अब 2 और 3 के दरम्यान में आप कहीं पे चेक कर लें, is it really going below 12 at any point? 12 से नीचे कहीं पे भी जा रहा है किसी पॉइंट के ऊपर? Basically just check that. ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर लें. फॉर इंस्टेंस आप 2.8 पे चेक कर लें. सो दिस पॉइंट हियर, इस पे देखते हैं 2.8 जब आप इसके अंदर इनपुट करते हो अपने ग्राफ के अंदर, 2x + 18/x है ना. इस ग्राफ के अंदर अगर आप 2.8 पुट करो इस इक्वेशन के अंदर 2.8 पुट करें तो बस क्या आता है? When x is equal to 2.8, what is the value of y? So just check that from a calculator. 2 into 2.8 plus 18 divided by 2.8, and that is giving me 12.02. So that's 12.02. So it looks like the graph is not really going to go below 12. वो 12 से ऊपर ही वैल्यू आ रही है. तो हमने यहाँ पे नीचे ग्राफ को थोड़ा सा नीचे ले गए थे उसके. So we should correct that and we should not take graph below that. So अगर आपको किसी पॉइंट के बारे में इस तरह से उसने पूछा हो तो you should just recheck it कि अच्छा उस पॉइंट के आसपास आपके पास असल में उसकी वैल्यू फंक्शन की क्या है. आप जाके चेक करके उसमें देख लो कि वाकई में नीचे आपके वो जाएगा ग्राफ या नहीं जाएगा. सो इन दिस केस वी फिगर्ड आउट कि ग्राफ आपका यहीं तक रहेगा बस. इट्स नॉट गोइंग टू गो बिलो दिस पॉइंट. सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. यहीं पे इस तरह से बन जाएगा. ओके, सो द मिनिमम पॉइंट देयरफॉर फ्रॉम द ग्राफ इज राइट हियर. यही आपके पास नंबर था. This is, if you read in the graph, that's 11 and 12. So that's this 12. So basically, minimum amount of fencing required according to the graph is 12. Minimum amount of fencing, minimum length of fencing, right? So minimum fencing required, minimum length of fencing, that is 12 meters. If you look at the y-axis here, that is 12 meters. So therefore, now you can calculate the cost per meter. Cost क्या होगी? Minimum cost 12 meters multiplied by the cost per meter, that was 20, and that gives you something. 12 into 20, that is going to be 240. That's $240. That is the least amount that you get. Okay. Okay. Let me check. You're saying in part C, isn't it 5.2? So on my graph, if I look at it here, so part C के अंदर we have to look for the value when y is equal to 14. y 14 कहाँ पर है? That's this value here. मैं y 14 के ऊपर जाके देखता हूँ अपने ग्राफ के ऊपर. One value I get it here. This. I go down there.
this is 1.8. Why? Because every box is representing 0.2 units. So 2 से 0.2 left पे आए, that's 1.8. Similarly, the other point that I'm getting on my graph here is this one. इसमें मैं जाके नीचे देखता हूँ. I have this point here on my graph. So if you see here, one small box represents 0.2 units. So this is 5.2, then this is 5.4. So this value that we have here, this is 5.4. So I'm getting 5.4 in my graph. Aapke graph pe agar 5.2 aa raha hai, you will write 5.2. So let me actually just look at the marking scheme, what it says there. Where is that? Okay, so the marking scheme, it says 5.2 se leke 5.4 tak, anything is acceptable. So you have to read on your graph. अपने graph के ऊपर check करेंगे 5.2 और 5.4 के अलावा के दरमियान में कोई भी number आए तो that is going to be correct. Okay, so you get 1.8 and 5.4. Okay, now let's look at part 2 of this. Now Zara wants to spend no more than $350 on the fence. Okay, so that's the maximum amount she wants to spend, $350. Find the greatest possible width of the garden that Zara can make. Okay, now think about this. Total amount that she wants to spend should be no more than 350. 350 is the maximum amount that she wants to spend. अगर ये 350 आपके पास maximum total cost है, what about the total length? What about the total fencing length? Total length of the fence? You know that 1 meter costs $20, right? 1 meter costs $20. So $350 में कितने meters आ जाएंगे? You just say 350 divided by 20, and that gives you some number. That is going to be 15, 16, 17, 17.5 meters. The maximum आपकी जो fencing की length हो सकती है, that can be 17.5 meters. Okay, another way to think about this could have been that you use ratios. You say $20 give you 1 meter of fencing. How much length will $350 give you? Let's call that x. ठीक है, इसको आप cross multiply करते, you will get 20x equals 350, and that gives you the value of x, that is 17.5. तो हमारे पास 17.5 meters total length of fencing चाहिए. Okay, अच्छा वो क्या कह रहा है? Find the greatest possible width of the garden. अब width की बात कर रहे हैं. It's not asking you about the length of the fencing. It's asking you about the greatest possible width. तो आप देख लोगे जाके अपने ग्राफ के ऊपर 17.5 के अगेंस्ट आपके पास क्या वैल्यू आ रही है for the width, right? So when the length of the fencing is 17.5, अब उसने आपसे ग्राफ का नहीं कहा हुआ वैसे, so you don't necessarily have to use the graph. आप ग्राफ के बगैर भी आप कह सकते हो. You have the formula, you know that y is equal to, you have that function y is equal to 2x plus 18 over x. It's actually preferred to use that because it's not given as far as I think. Fencing costs $20. Yeah, so you're not told specifically कि आपको graph use करना है. So you can just, use your equation there. You can say this is y equals 2x plus 18 over x, 2x plus 18 over x. y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 17.5. आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो. If you wanted 2x plus 18 over x, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, but actually quadratic बन जाएगी. Quadratic equation आपको सॉल्व करनी पड़ेगी. So if you wanted, you could solve this, but इससे लंबा हो जाएगा. So आप इसको सॉल्व कर सकते थे इक्वेशन में डाल के. That would be one possibility. लेकिन वो quadratic यहाँ पे बन जाएगा तो आप x को मल्टीप्लाई करोगे. So if you want, you can do that. The other way, of course, is that you look at the graph. Graph पे जाके देख लें 17.5 आप देखें y-axis के ऊपर. You look at the y-axis, 17.5 is going to be here. 17.5 के ऊपर आप देख सकते हैं कि greatest possible width आपकी क्या हो सकती है.
ठीक है 17.5 के ऊपर। अच्छा एक तो width ये पॉसिबल है जो आपको यहाँ पर आ रही है, this is going to be something around is it here? Yeah, so it's here, so that's around 1.3। ठीक है, लेकिन इसी के ऊपर आपके पास एक और वैल्यू भी आती है। We go right there on the other side, your graph, this line cuts the graph again at this point here। यहाँ पे आपकी width ज्यादा आ रही है उससे, क्योंकि आपको greatest possible width चाहिए, so you would actually prefer this one, and this turns out to be 7.6। जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है that is 7.6, so you say this is 7.6, this is the greatest possible width that Zara can make, right? $350 थे, $350 से हमने क्या किया, हमने corresponding length of fencing required calculate कर ली, that's 350 over 20, that's 17.5। the total length of fencing आ गई, उस fencing के against what we do is we find the corresponding value of width on the x-axis. That turns out to be 7.6 here, and that's our result. Okay, is this clear? Any questions on this? Any problems? Any problems with this? Okay, good. Let's move on. Let's look at question number 7. So this is transformations. Now triangle A is drawn on the grid. There's a transformation P that is represented by this matrix, -2, 0, 0, -2. P maps triangle A onto triangle B. We have to draw and label the triangle B. ठीक है, अब इसको पता है आपको दो मेथड्स होते हैं इसके इस तरह के प्रॉब्लम्स को करने के। Either you can figure out which matrix this is representing. So if you remember your matrices, तो ये कौन सा matrix है? It's of that form K0 0 K, जहाँ पे आपका scale factor जो है वो K होता है। It's an enlargement हो रही है with scale factor -2। आप इस मैट्रिक्स की बात करो, you can figure this out कि कौन सा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैट्रिक्स। दिस इज enlargement with center 0 0, the origin center, and scale factor -2। That is what is happening here। अगर आप ग्राफ पे जाके देखो, आपने origin as the center of enlargement लेना है, उसके about आपने -2 के scale factor से इसको enlarge कर देना। ठीक है, अब -2 remember, जब negative sign आता है उसका मतलब ये है कि आप उसके opposite side पे चले जाओगे, center of enlargement के opposite side पे। That's one thing, and since you have 2 here, your figure will be twice the size of the original figure in terms of the length that it has। इसका तरीका क्या होता है, we see कि अच्छा origin से एक पॉइंट को देख लें, ये पॉइंट कितना दूर है, इधर जितना भी ये दूर है उसके डबल लेंथ आप ऑपोजिट साइड पे कर दें। इसकी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से भी उससे डबल लेंथ हो जाएगी। तो ये जितनी लेंथ है, तो 2 यूनिट्स टू द राइट, 2 यूनिट्स राइट पे जा रहे हैं ना यहाँ पे, अब वहां पे 4 यूनिट्स लेफ्ट पे चले जाएं, दैट्स गोइंग टू बी हियर, एंड सिमिलरली 1 यूनिट अप, वहां पे 2 यूनिट्स डाउन चले जाएं, आपका ये पॉइंट जो है इधर आ जाएगा। So if I were to mark this point as P, this is Q, this is R, तो मेरा जो P पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा, that's going to be here, that is P dash। You can also think of it this way, सेंटर से इस पॉइंट का वेक्टर क्या बनता है, P का वेक्टर क्या बनता है, P का वेक्टर बनता है 2 horizontally and 1 vertically। आपने क्या करना है, इसको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। स्केल फैक्टर क्या है, -2। What does that give you? That gives you -4 and -2। So basically center of enlargement से आपको क्या करना है, 4 units left जाना है और 2 units down जाना है। So that's where that point P is going to be. This is your P dash। Okay, so what about Q? Q कहाँ पे था, Q is 3 units to the right, 1 unit up, इसको आप -2 से मल्टीप्लाई कर दो। What do you get? You get -6 and -2। Center of enlargement से 6 units to the left,
2 units down, that point is going to be here. This is Q dash. And then you have R. R kya hai? R is from the center of enlargement. This is 2 units right and 3 units up. So minus 2 se multiply kiya. We get minus 4 and minus 6. So center of enlargement se 4 units left and 6 units down. That's going to be right here. This is your R dash. Okay, अब इनको join कर दें, and this will be your figure that you need there. PR, that's here. Okay, PR ये हो गया. Then you have PQ here, and you have this and this. Okay, so this is our figure. This is the enlarged figure that we get from this. ठीक है, दूसरा method of course आप matrices वाला use करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. Matrix multiplication. So you just write down the points that you have. So you say minus 2, 0, 0, minus 2. This is the matrix. जो points हैं सारे वो आप लिख लें. P, Q, R के P के coordinates क्या हैं? P के coordinates are 2 and 1. Q के coordinates are 3 and 1. R के coordinates are 2 and 3. Right? ये matrix multiplication कर लें. This is P, this is Q, this is R. आपके पास यहाँ पे result आ जाएगा. First will be P dash, then you have Q dash, and then you have R dash. ठीक है, multiplication करके वो भी आप कर सकते हैं. ठीक है, so you can use any method here. This is what we get. Okay, ये हमारे पास ये triangle आ गया, इसको हमने B label कर दिया जैसे उसने कहा था. So then it says describe fully the single transformation P. अच्छा वो तुमने पहले ही ऊपर ही figure out कर लिया कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है. अगर आपने मैट्रिक्स से किया होता फॉर इंस्टेंस, अगर आपने मैट्रिक्स से किया होता आपको यहाँ पे नजर आ जाता कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. इट्स एन एनलार्जमेंट विद स्केल फैक्टर -2 एंड सेंटर एज द ओरिजिन हियर. ठीक है, मैट्रिसेस आपको पता होने चाहिए कौन से हैं. उसका तरीका इफ यू रिमेंबर 1 0 और 0 1 को यूज करके हम वो मैट्रिसेस याद कर सकते हैं. Figure out कर सकते हैं at खुद से भी very quickly. So if you remember that method, that's good. If not, we can discuss that individually at some point after this paper maybe. तो वो आपको अगर पता है ये matrix कौन सा है, you can just write that from there as well. It's an enlargement. एक तो आपको पता है कि ये enlargement है और enlargement के साथ साथ आपको जब enlargements describe करनी होती हैं, you have two things that you have to write down. So one is the center of enlargement. The center of enlargement is the origin. Matrices जितने भी हमारे पास हैं, हम वहाँ पे center of enlargement, center of rotation, वो दोनों चीजें जो हैं origin ले रहे होते हैं, right? So 0 0 आपका center of enlargement, and the scale factor is going to be -2. So that is what we have. So then it says write down the ratio of the area of triangle A and the area of triangle B. Now remember enlargement में जो figures आती हैं, they are similar to each other, right? They are similar to each other. They are similar figures. तो यहाँ पे एक length जो है वो 1 है. Enlarged figure के अंदर, sorry, एक length हमारे पास 2 है. If you look at the original figure, if this length is 2 here, कोई भी आप length देख लें, ये length 2 है, इससे corresponding length यहाँ पे 4 है. इन length को देख सकते हैं. आप दूसरी नीचे वाली length को देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं. This is 1, this is 2. So basically length की ratio क्या है? That is 1 and 2, right? So you remember that formula that we have for similar triangles, for similar shapes, A1 over A2 is equal to L1 over L2 का whole square. ठीक है, तो L1 over L2 क्या है? 1 हमारे पास A की लेंथ है, 2 हमारे पास B की लेंथ है 1. हम क्या करते हैं? We say 1 over 2 का whole square. That gives us 1 over 4. So basically, area of triangle A अगर 1 है, तो area of triangle B कितना आएगा? That will be 4. And also write it like this. You can say 1 ratio 2 का square, which is 1 ratio 4 then.
ठीक है, so it turns out to be 1:4 using similar figures. Now there's another transformation. Transformation Q is represented by this matrix 1, 0, and 0 minus 1. Now Q maps triangle B onto triangle C, draw and label triangle C. ठीक है, again one possibility is कि आप figure out कर लें कौन सी transformation है. You have the matrix given, you figure out कि कौन सी transformation. ठीक है, so let's figure out. So मुझे भी याद नहीं है सारे matrices, तो इसका तरीका क्या होता है figure out करने का जल्दी से. You have 1, 0. अब ये दो पॉइंट्स हमेशा कंसिडर करते हो 1, 0 and 0, 1. Okay, 1, 0 and 0, 1. You consider these 2 points. ये आपके पास ओरिजिनल पॉइंट्स. ठीक है, अब ये पॉइंट्स कहाँ पर जा रहे हैं? ये पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं 1, 0 के ऊपर, तो पहला वाला पॉइंट वहीं पे रह रहा है. So this is going to 1, 0. So this point is staying there. पहला वाला point. The second point is going to 0 minus 1. वो पॉइंट चला गया 0 minus 1 के ऊपर. That's here. ठीक है, तो वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा 1, 0. 0, 1 जो है वो नीचे चला गया है. Now you can think from the graph what kind of transformation is this. So क्योंकि 1, 0 मूव ही नहीं कर रहा, 0, 1 जो है वो 0 minus 1 पे चला गया है. It's clear it's a reflection in the x-axis. This transformation is basically a reflection in the x-axis. ये आपकी reflection हो रही है x-axis के अंदर. So if you can figure that out कि ये reflection है, you just reflect that figure on your diagram there. ठीक है, आपको पता चल गया कि x axis में रिफ्लेक्शन है. Just go to the diagram, इसका रिफ्लेक्ट कर दो b को. That's going to be like this. ठीक है, आपका जितने डिस्टेंसेस नीचे थे उतने ऊपर हो जाएंगे. और if you remember those coordinates वाला मेथड के आपने बस कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट्स के साइन रिवर्स कर देना. राइट, जो -2 थे यहाँ पे वो +2 पे चले जाएंगे. जो -6 था यहाँ पे वो +6 पे ऊपर चला जाएगा. X coordinates change नहीं होंगे. This is the figure that you get. You can use a ruler to draw this, of course. But your lines are straight, but this is approximately the figure that you get. इस figure को हमने label करना है C. So this is our triangle C. ये B की reflection है ऊपर. हमने transformation figure out कर ली matrix से कि वो कौन सी transformation हो रही थी. That was a reflection in the x-axis. Right? So that's one possibility. The other possibility again is the same. कि आप जो है वो matrix method use कर लो 1, 0, 0 minus 1. आप क्या करो coordinates जो हैं B के coordinates क्या थे? B के coordinates were -4 minus 2. So -4 minus 2. Then you have -6 minus 2. -6 minus 2, and you have -4 minus 6. -4 minus 6. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, you will get the coordinates of C. उनको प्लॉट कर देंगे और आपके पास वो ट्रायंगल आ जाएगा. Right? You can also do it using this method. Okay, now it says transformation Y is represented by this matrix. So 1, 0, 0, 3. अब इसका मसला ये है कि ये हमें इस मैट्रिक्स का हमें नहीं पता कि ये कौन सा होता है. राइट, इस तरह का मैट्रिक्स हमने नहीं किया हुआ. उनके सारे मैट्रिसेस जो हमने किए थे उसके अंदर या तो 1, 0, 0 minus 1 आ रहा होता था. 1, 0 और 0, 1, 0 और -1 ये 3 नंबर्स आ रहे होते थे, या फिर डायगोनल के ऊपर हमारे पास सेम नंबर्स होते थे. तो ये क्या कह रहा है? Y maps triangle A onto triangle D. A को जो है वो D पे मैप करता है, A को D पे मैप करता है. Okay, and find the matrix that represents the transformation that maps triangle D onto A. अच्छा, ये actually जो है ना, it's one of stretch or shear. I think it's a stretch. तो ये हमारे पास जो है वो अब syllabus नहीं है, so we don't have to do that. ठीक है, तो ये stretch है. I guess stretch का matrix ये होता था, but that's not part of our syllabus anymore, so we don't have to do this. ठीक है, इसको हम skip कर देंगे. We don't have to do this. It's not part of our syllabus anymore. ठीक है, 2020 onward syllabus के अंदर ये आपका part नहीं है. ठीक है, so इसको आप exclude कर दें. You don't have to worry about this.
स्ट्रेच और शेयर हमारे पास होते थे पहले सिलेबस के अंदर. They are not there anymore, so that's why we can skip that. अच्छा, let's look at question number 8 here. अच्छा, उससे पहले any questions on this, any of these parts in question number 7? Any questions on that? Any problems? Okay, good. Let's move on. So question number 8. Question number 8 में क्या है? We have a line 2y equals x plus 4 that is drawn on the grid. You can see that there. On the grid, draw the line x plus y plus 2 equals 0. तो ये आपने line draw करनी है. X plus y plus 2 equals 0. So आप straight line कैसे draw करते हो? You take any 2 points. ठीक है, आप कोई भी 2 points ले लेते हो. So for instance, you take x equal to 0. X equal 0 देख लें. के ऊपर आपकी y की वैल्यू क्या आती है? x की वैल्यू अगर 0 डाल दें तो y will be -2. ठीक है, y की वैल्यू 0 कर दें तो x will be -2. ठीक है, you got 2 points. इनको प्लॉट कर दें 0 -2, that is going to be here, and -2 0, that is here. ठीक है, अब इसके थ्रू लाइन ड्रॉ कर दें. That's going to look like this. ठीक है, this is the line that we were asked to draw. Okay, तो आपने वो दोनों पॉइंट्स स्टार्ट कर दिया and you just make that line like that. Very accurate. Like this. So that's your line. Okay, that's my उसने कहा था x plus y plus 2 equals 0. This is the line that we have drawn there. That's x plus y plus 2 equals 0. Okay. Now, the region R is represented by these three inequalities. We've got 2y greater than or equal to x plus 4. अब देखिए y को सब्जेक्ट बनाना होता है. Remember, y एक तो पॉजिटिव होना चाहिए y और लेफ्ट साइड पे होना चाहिए. ठीक है, आपने सबसे पहले काम क्या करना है? इनइक्वालिटीज के अंदर इस तरह की जहाँ पे आपको इनइक्वालिटीज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी होती है, you take the term in y on the left side. ठीक है, and it should be positive. y वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए. हमारे पास ये है. अगर आप ये करना, इसको y को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो वो भी कर सकते हो. y को आप लेफ्ट, सिर्फ y को लेफ्ट पे रहने दो. Take everything to the right side. Right, so you have x plus 4 over 2. This is what we have. And the second inequality, this is basically y greater than or equal to -2 minus x. And the last one, it's y less than or equal to 2. ठीक है, फिर हमने कहा था जब greater than होता है, greater than equal to होता है, greater होता है, तो you basically shade the region upwards or towards the right. ठीक है, जब less than or equal to होता है, less than होता है, you shade the region downwards or towards the left. ठीक है, so let's look at the first one. 2y greater than or equal to x plus 4. So basically जो line draw की हुई है उससे greater, उसके ऊपर वाला region हमारे लिए relevant है. So above that line, just mark that arrow कि इस line से ऊपर होना है हमें. What about the second inequality? Again, we also have a greater than sign there. जिसमें y को subject बनाया, we also have a greater than sign here. इसके भी ऊपर होना है, so इस line के भी ऊपर. That's it. ठीक है, अच्छा. और y is less than or equal to 2. अभी एक और आपके पास inequality है. इसकी पहले लाइन ड्रॉ करते हैं. लाइन कौन सी ड्रॉ करनी होगी? y equal to, let's draw that line. y equals to line क्या होगी? It's a horizontal line that is going to be like this. y equals to line ड्रॉ कर लेते हैं वहां पे पहले. That is like this. ठीक है, अब it says you have to be less than or equal to 2. यहाँ पे लेस देन का साइन आ रहा है, यानी कि आप इसके या तो लेफ्ट पे हो गए या नीचे हो गए. तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसके हम कहेंगे, इसके हम नीचे. ठीक है, so what is the shade, what is the relevant region then? That's this region. This is the region that satisfies those conditions कि y जो है वो 2 से कम है और बाकी दोनों inequalities के ऊपर वाला part. This is the common region for all of them.
we can now label this region. उसने कहा shade करना है और label करना है, यहाँ पे हम लिख देंगे this is the region R. Okay, so that is what you have here. So then it says there's a line L that is perpendicular to 2y equals x plus 4. There's a line that's perpendicular to this line, 2y equals x plus 4. ये जो original line बनी हुई थी, that was 2y equals x plus 4. उसके perpendicular है. So this line L is perpendicular to that line and it passes through the point 1 and 8. Show that the equation of the line is y equals 10 minus 2x. This is what you have to do. Okay. एक तो उसने कहा है perpendicular इस line के and it passes through this point. Remember, equation of line के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? We need two things. We need the gradient and we need one point. एक point तो हमारे पास है, that is 1 and 8. So we already have 1 point. What about the gradient now? अब देखिए वो 2y equals x plus 4 के perpendicular है. अगर हमें 2y plus equals x plus 4 का gradient मिल जाए तो उसका negative reciprocal ले लेंगे, हमारे पास line L का gradient आ जाएगा. So what is the gradient of this line? Let's figure that out. So gradient के लिए हम क्या करेंगे? तो standard form में convert कर लेते हैं. We have 1 over 2x plus 4 over 2, which gives you 1 over 2x plus 2. इसको हम standard form में convert कर लिया. This is y equals mx plus c form. If we compare the two, we find that the gradient here of this line is 1 over 2. ठीक है? तो line L का gradient क्या आएगा? Gradient of the line L, that's going to be negative reciprocal of this, which is minus 2. ठीक है? ये आपके पास एक point है, ये आपके पास gradient है. You just write down the equation. Y equals mx plus c से अगर आप करना चाहते हो, you will say y equals minus 2x plus c. Then you put that point here. 1 8 इसके अंदर input कर देते हैं. You have 8 here minus 2 into minus 1 plus c, and c is equal to 6. ठीक है, तो equation क्या बन गई फिर? That's y equals minus 2x plus 6. This is the equation of the line that we have. Y equals minus 2x plus 6. So उसके बाद वो क्या कहते हैं? Use an algebraic method to find the coordinates of the point of intersection of these two lines. That's 2y equals x plus 4 and y equals 23 minus 2x. ठीक है, algebraic method use करना है. यानी ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके आपने estimate नहीं करना, इसको solve करना है algebraically. So आप इसको बस simultaneously solve कर लेंगे. You can either use elimination or you can use substitution, whatever you prefer. Already उसने इस form में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं? Let's just use substitution. 2y equals x plus 4. यहाँ पे input कर देते हैं. Put y equals 23 minus 2x. यहाँ पे क्या आएगा? 2 into 23 minus 2x. That's equal to x plus 4. And this gives us 46 minus 4x. That's equal to x plus 4. And then 5x is equal to 46 minus 4. That is 42. X की value हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है? 42 over 5. That is 8.4, I think. That's 8.4. So x is equal to 8.4. X 8.4 आ गया. अब क्या करेंगे? इसको दूसरी equation के अंदर input कर देंगे. So y equals 23 minus 2 into 8.4, and that gives us something that's 16.8, and 6.2 हमारे पास y की value आ जाएगी. ठीक है? So y equals 6.2 and x equals 8.4. You say the point of intersection, the point where those two lines intersect, is this point that we have found by solving those two equations simultaneously. So that point of intersection is basically 8.4 and 6.2. इस point को intersect करते हैं एक दूसरे को. Is this okay? Any problems with this? With any part of this question? Is this fine?
Is this fine? Any questions on this? Okay, so what if we have to find it graphically? If we have to find it graphically, what we do is we already have this line drawn there, 2y equals x plus 4. 2y equals x plus 4 to already given the na? That's there. 2y equals x plus 4. If you had to find it graphically, you will just draw this other line as well. अब इस line को भी वहाँ पे draw कर देते. What do you do for that? You take 2 points, 2 points ले लें, line को वहाँ पे draw कर दें. यहाँ पे line को draw कर दें, and then you see the point of intersection उन दोनों lines का क्या आता है. Now of course it's not going to be very accurate because आपके पास वो grid proper नहीं बनी हुई, तो आपको estimate करना पड़ेगा. For example, आपके point जो है वो क्या आ रहा है वहाँ पे 8.4 and 6.2. तो ये तो इस ग्राफ के अंदर तो वो आ भी नहीं रहा, ग्राफ के बाहर जा रहा है. सो जहां पे भी होता इस इधर कहीं पे होता लेट्स से, फिर आप उसको एस्टिमेट करते हैं कि अच्छा वो एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यूज आएगी. So you'll basically draw the other graph and then see कि what where is the point of intersection, right? इस केस के अंदर हम वो कर भी नहीं सकते because point of intersection इस ग्राफ के ऊपर आएगा ही नहीं. It will go out of the graph because you see the x coordinate that's coming out here is 8.4. यहाँ पे हमारे पास इस ग्रिड के ऊपर we are not even going beyond 6. 8.4 तो राइट साइड पे कहीं पे जाके आता, तो ग्राफ से बाहर जाता for point of intersection. तो ग्राफिकली आप इस केस के अंदर फाइंड कर भी नहीं सकते थे unless आप खुद से एक ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करते, right? So you would not be able to do that. But अगर करना हो तो graphically you would draw that line then read from the graph वो intersect कहाँ पे करते हैं. Okay? All right, let's move on. Question number 9. So now you have a pyramid here. The volume of pyramid is given. The diagram shows a pyramid with a rectangular horizontal base. So it's a rectangular base at the bottom, right? So 4.3 and 6.2. These are the lengths of that rectangle. Vertex F of the pyramid is vertically above the center of the base. That is E. ये E बिल्कुल center में है. Center का क्या मतलब है? It's the point of intersection of the diagonals. Diagonals का point of intersection है. Rectangle के diagonals का point of intersection, that's right here. अच्छा, remember जब भी आपके पास ये 3-dimensional figures होती हैं, तो जो vertical होता है आपके पास, for example यहाँ पे जो vertical है, F is so A, B, C, D, that is horizontal. तो F है वो ऊपर हवा के अंदर है, right? तो F से जो नीचे लाइन जा रही है E के ऊपर, since E is right below F, E के ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे they are all 90. So FE के साथ जितने भी एंगल्स बनेंगे, so FED कह लें आप, right? FEA, FEC, FEB, all of these angles are 90 degrees. FE के साथ जो भी एंगल्स बनेंगे वो सारे 90 होंगे, ठीक है? Because 3 dimension के अंदर you have to remember this. जो ऊपर से perpendicular आ रहा होता है नीचे horizontal के ऊपर, उसके साथ सारे एंगल जो है वो 90 बनते हैं, ठीक है? अच्छा, then you're given the lengths of the rectangles, that's AB and BC. The length of each sloping edge of the pyramid. So basically ये sloping edge का मतलब ये sides वाली length जो है, so this is 9.5. right? वो साइड वाले वो भी 9.5 है, ये भी 9.5 है, सारी 9.5. ठीक है, उसने आपको बताया हुआ, they are all 9.5. Okay, now you have to show that the height EF of the pyramid is 8.72. EF आपको figure out करना है, that is 8.72, correct to 3 significant figures. So how can we figure this out? EF. अब EF के लिए, if you were to consider this triangle, आप ये देखें EFC, it's a right angle triangle, right? EFC is a right angle triangle. So I will draw this here in 2 dimensions. It'll be easier to understand. You've got E here, you've got a vertical, you've got C here, and you've got F there on the top.
The hypotenuse is 9.5. Now the problem is we have to find EF. We don't have any other information. क्या हम EC निकाल सकते हैं किसी तरह से? We can, because we know there's a rectangle in the base. So base आपकी rectangle है और उस rectangle के अंदर you are given the length, that is 6.2, and the width, that is 4.3. So you have A, so that was B, B, A, B, C. What you can do here is you can find AC. AC figure out कर सकते हैं आप. It's a right angle triangle. अगर आप rectangle को दो parts में divide कर दें, Pythagoras use कर सकते हैं. You can find AC. AC square is equal to 6.2 का square plus 4.3 का square. यहाँ से क्या आएगा? आपके पास AC आ जाएगा. So AC square turns out to be 6.2 का square plus 4.3 का square, and that is 56.93. This is 56.93. So AC क्या आ जाता है? AC is 7.55. 7.55. ये आपके पास आ गया AC. Now E is in the middle. So E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. तो EC क्या होएगा फिर? EC is going to be half of that. ठीक है? EC is going to be half of that. तो वो क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे. EC की जो लेंथ आएगी, that will be 7.545 divided by 2, and that turns out to be 3.77. 3.77. ठीक है? ये आपके पास EC आ गया. This is 3.77. Once you have EC, now you can find EF. EF आप figure out कर सकते हो आप. ठीक है? या working force नीचे यहाँ पे show करोगे. मुझे अगर मैं नीचे जाता तो मुझे वो figure ऊपर नजर नहीं आ रही थी. That's why I just did that there. You should of course do it in the space that is provided here. यहाँ पे हमारे पास EC आ गया. So now EF therefore is going to be calculated using Pythagoras. You say EF का square plus 3.77 का square is going to be equal to 9.5 का square. Right? Again इस पे Pythagoras use कर लिया. यहाँ से बस EF आ जाएगा. EF square, that is 9.5 का square minus square, that is 76.0175. Then we take the square root of that. What happened there? Yeah, so we were here. यहाँ से EF निकाल लेंगे. EF turns out to be square root of that, which is 8.72. 8.72. That is the height that we were looking for. ठीक है? 8.72 centimeters. वही उसने कहा था आपको शो करने के लिए. We have shown that. Okay. Then it says calculate the volume of the pyramid. Volume of the pyramid क्या है? उसने ऊपर फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है. 1/3 into base area into height. Base area क्या है? Base तो rectangle है. So 1/3 multiplied by the area of the base. Area of base क्या है? 6.2 into 4.3. So that's 6.2 into 4.3 multiplied by the height. Height क्या होती है? Base से perpendicular height to the corner, and that is there. That's EF. EF हमने पहले part में already find कर लिया. That's 8.72. We just apply this formula. अब यहाँ पे देखें, अगर आपसे first part for instance अगर किससे नहीं भी होता, उसने देखें यहाँ पे इसलिए show लिखा हुआ है ताकि you have this value given. So if somebody was not able to do the first part, for instance, they should still be able to do the second part here, because 8.72 उसने height तो आपको बता दी है. तो अब आप जो है सिर्फ formula apply करके you can at least get these 2 marks, even if you were not able to get the marks there in the first part. अगर आपसे पूरा show नहीं भी होता, you can still do the second part, right? So what do we get here? We get 6.2, 4.3
So it is 77.48. Okay, so that's 77.5 centimeter cube. That is the volume that we have here. Okay, Achha. Now let's look at the next part. Now it says calculate the angle AFB. Calculate the angle AFB. Let's go to the figure. AFB. कौन सा angle है? AFB. That's this angle here. ये angle find करने को कह रहा हूँ आपको. Angle AFB. Okay. Let's draw that triangle here. AFB triangle. That's basically like this. AFB. Right? ऊपर F है, नीचे A है यहाँ पे, ये B है. और आपको ये वाला एंगल चाहिए. Let's call this theta. Theta, this is what you have to figure out. Now, do we have the length? We know AB. AB is 6.2. AF or BF, they're both, these sloping edges. जो उसने यहाँ पे बताया हुआ था. उनकी length कितनी है? They are 9.5. So we just say AB is 6.2. That was given. And the sloping edges are 9.5 and 9.5 each. So they are both 9.5. ठीक है? And you have to find this angle theta. अब आप देखोगे कौन सा, क्या use कर सकते हो यहाँ पे? Can we use sine rule? Well, we don't have any pair of angle and side given, right? कोई भी pair हमारे पास पूरा नहीं given, तो हम sine angle नहीं use कर सकते. We have to sine rule नहीं use कर सकते. We have to use the cosine rule. ठीक है? Cosine rule क्या होता है? It's a square equals b square plus c square minus 2bc cos of a. Remember, जो side यहाँ पे left पे होती है, उसके opposite angle you have here. So the angle that we are using here, that we want to find, उसके जो opposite side होगी, that is going to come on the left side here. So that's 6.2 ka square. That's equal to 9.5 ka square plus 9.5 ka square minus 2 into 9.5 into 9.5 into cos of that theta. जो आपको figure out करें. ठीक है? Now just evaluate this. You get 6.2 square minus 9.5 square minus 9.5 square. That's equal to minus 2 into 9.5 into 9.5. इसको यहाँ पे evaluate कर लें. Just make sure you use high accuracy. So I'm getting minus 180.5 cos theta. ठीक है? अब लेफ्ट साइड पे क्या आता है? 6.2 का स्क्वायर minus 9.5 का स्क्वायर minus 9.5 square. That is minus 142.06. अब इसको जाके वहां पे डिवाइड कर देते हैं. Minus 180.5. This is equal to cos of theta. ठीक है? So cos theta हमारे पास यहाँ से आ जाता है 180.5 से डिवाइड कर दिया उसको. That is 0.787. So this is 0.787. All you have to do now is take cos inverse. So your theta therefore is going to be cos inverse of 0.787, and you'll be able to find that angle. So this angle turns out to be 38.1 for me. This angle is 38.1 degrees for me. Okay, ये आपके पास वो angle आ गया जो आपको figure out करना था just using the cosine rule. Then it says calculate the angle of elevation of F from the midpoint of AB. From the midpoint of AB. So now you basically want to stand here. You want to stand here at the midpoint of AB. यहाँ पे आप खड़े होके आप देखना चाहते हो कि ये एंगल क्या बनता है आपका. ठीक है? Now again, F के साथ आपने कनेक्ट करना है इस AB के मिड पॉइंट को. ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे नीचे रिमेंबर हमारे पास रेक्टेंगल है ना? नीचे रेक्टेंगल है. Now if you look at this,
यहाँ पे बना लेते हैं इस फिगर को। ये हमारे पास रेक्टेंगल था नीचे, A B C D. What is the midpoint of the rectangle of AB? That is M. M आपका midpoint है, और जो E है यहाँ पे, E is right in the center here. E is here. This is E. You know that this total length is 4.3. The total length 4.3 है, तो ME कितना आएगा? ME is going to be half of that because E बिल्कुल center में आ रहा है वहाँ पे, तो half of 4.3, what is that? हम calculate कर लेते हैं। ME length कितनी है? 4.3 divided by 2, that is 2.15. तो ME length is 2.15. एक तो हमने ये figure out कर ली, ME length is midpoint से, जो वो कह रहा है AB का midpoint, उससे E की length की है। अब E के बिल्कुल ऊपर F है, राइट? E के बिल्कुल ऊपर F है, तो आप क्या कर सकते हो? मेक दिस ट्रायंगल हियर, यू मेक दिस ट्रायंगल MEF, MEF। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है, जिसको मैं आपको कहा था FE के साथ जो भी एंगल्स बनेंगे वो सारे राइट एंगल्स होंगे, राइट? FEM, it's going to be a right angle triangle. We can draw that triangle here. It's going to look like this. F in 2 dimensions. It's going to look like this. F is right on top of E. This is F. This is E. यहाँ पे आपका 90 बनेगा हमेशा, राइट? जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता है, जो आपके पास ग्राउंड पे पॉइंट होता है जिसके ऊपर कोई चीज होती है, वहां पे हमेशा 90 बनता है इस तरह से, ठीक है? आपने इसको M के साथ डाल दिया। नाउ EM की लेंथ आपने निकाल लिया, दैट इज 2.15। EF भी आपको पता है, क्या EF भी पता है? EF कितना था? It was 8.72. You also know this. This was 8.72. आपको angle of elevation चाहिए from M. M से आप खड़े होकर देखो F को, तो कितना आपको ऊपर देखना पड़ेगा? This is the angle of elevation. That's theta. ये theta पे find करना है. So you have perpendicular and the base. इसके opposite है, उसके साथ वाली side है. So tan of theta is equal to 8.72 divided by 2.15. Okay, so now tan theta from here turns out to be 8.72 divided by 2.15. That is 4.056. So that's 4.056. इसका tan inverse ले लें। इसका tan inverse लेंगे तो we get 76.1 degrees. थीटा हमारे पास यहाँ से आ जाते हैं 76.1 degrees, ठीक है? That is the angle of elevation of F from this point M, जो आपका AB का midpoint. Okay, is this clear? Does this make sense? Any issues with this? 3 dimensions के अंदर आपको बस ये देखना होता है 3 dimensions को किस तरह से आपने 2D के अंदर लेकर आना है, उसमें किस तरह से triangles बन रही होंगी, and this is the key point there, कि जो आपके पास यहाँ पे एंगल बनता है ना, जिस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर कोई चीज होती है, वहां पे एंगल्स आपके सारे 90 बनते हैं। All of these angles are 90. Okay? Any questions on this? Okay, let's do the last one here. So it's about circles. So let's think about this one. Okay, so now we have this diagram that shows 2 circles that touch at C. Okay, so these 2 circles touch at C. A, B, and C are points on the small circle. Okay, and center is X. C, D, and E are the points in the bigger circle, and the center of that is Y. And we have those straight lines given. Ek angle X given hai, that's this angle here. Prove that triangle BCX is similar to triangle DCY. Okay, BCX kahan par hai? BCX is this triangle. That's this triangle here. It's similar to DCY. That is this triangle here. ये दोनों हमने किसी तरह से similar prove करनी है, ठीक है? अच्छा, now
सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, एंगल्स आर ऑल इक्वल, सारे एंगल्स, तीनों एंगल्स जो हैं ट्राइंगल के वो इक्वल होते हैं, मतलब एक दूसरे के इक्वल होते हैं, corresponding angles इनके similar figures में equal होते हैं. So how do we prove that all three of these angles for these two triangles are equal? अच्छा, एक तो काफी straightforward है. This angle here and this angle here, these are vertically opposite, right? So अगर हम एक को A कह लें, small a, दूसरा भी A होएगा. इसको या फिर आप उसको कह लें, let's call this x. X तो वहां पे है. Yeah, let's call this A. So this is A degrees. This is also A degrees. You have to give a reason for each statement that you make. So you can say, you can start with this. The angle BCX is equal to the angle BCY. Why? Because they are vertically opposite. Okay, that was fairly straightforward. Let's think about the rest of them. अब ये हमें पता चल गया कि these are vertically opposite angles. अब उसके बाद देखें, if you think about this, dy is the radius, ये radius है, और ये cy भी radius है. इसका मतलब है कि दोनों equal होने चाहिए. So if this angle, if the angle opposite to this side is A, the angle opposite to this side should also be A. ये भी हमारे पास A आ. So what we get is कि जो हमारे पास एंगल है सी डी वाई, angle CDY, that's this angle here, that is equal to angle BCY. ये दोनों equal हैं. Why? Because it's an isosceles triangle. ठीक है, आप यहाँ पे बस लिखते हैं it's an isosceles triangle. अच्छा, अब उससे क्या फायदा हुआ? यही चीज आपकी दूसरी ट्रायंगल में भी अप्लाई हो रही है, राइट? अगर आप दूसरी ट्रायंगल देखो उसमें भी यही है. This is the radius and this is the radius. So the opposite side, opposite angle of this side should be equal to the opposite angle of this side. So if that is A there, this should also be A. That's what you write next. You say the angle XBC is equal to the angle BCX. Okay, that's equal to angle BCX. Again, the reason for that is also isosceles triangle. ठीक है, तो उसके corresponding angles जो हैं, तो equal sides होती हैं, उनके opposite angles equal होते हैं. So that is what we're using here. So if that is the case, that means ये जो ये वाले दोनों angles हैं, ये भी आपस में equal हैं, right? ऊपर नजर आ रहा है, ये angle जो है, वो भी हमारे पास equal होंगे. ठीक है, ये हो गया. So we say angle CDY, therefore, from this it implies CDY is equal to the angle XBC, right? Because हमें पता है कि ये दोनों equal हैं आपस में. इन्होंने ऊपर सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी ये थी, वो दोनों आपस में equal हैं. तो अगर ये दोनों equal हैं और ये भी एक इक्वेशन है हमारे पास, तो ये भी आपस में equal होंगे. ठीक है, तो ये भी हमारे पास दूसरे corresponding angles equal आ गए. Now, if two triangles are equal, if two angles are equal, तो तीसरा एंगल जो भी रह जाएगा वो तो इक्वल ही होएगा. सो तीसरा एंगल क्या रह गया है जो सेंटर में बन रहा है? So that's BXC. The angle BXC, that should be equal to the angle DYC. Why? Because the other two angles are equal. क्योंकि बाकी दोनों इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल, क्योंकि आपका टोटल सम तो 180 होता है ट्रायंगल के अंदर, तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल ही होएगा फिर. सो सिंस द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, सो द थर्ड मस्ट आल्सो बी इक्वल. ठीक है, अब सारे एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. आपको
मिल गया कि all angles are equal, so they are similar triangles. All angles का मतलब यहाँ पे क्या है? All corresponding angles are equal in those triangles. So corresponding angles are equal. So that's why they are similar triangles. Okay. So then it says find in terms of x dcy. dcy find करना है x की term. Okay. dcy, where is that? dcy. Certainly erase the previous part there. dcy figure out करना है. Okay. We already know that this is x. ये हमें x पता है. ये जो है ये center है. Right? Y is the center. So let's think about this. dcy कैसे figure out कर सकते हैं? अच्छा यहाँ पे y is the center. Since y is the center, we know that CE is the diameter. CE diameter है. क्योंकि CE diameter है, तो CE जो angle बनाएगा यहाँ पे circumference पे, this should be 90. ये angle 90 होना चाहिए. ठीक है? ये angle पूरा 90 होना चाहिए. ठीक है? उसमें देखते हैं उसने reasons का कहा है यहाँ पे. उसने यहाँ पे reasons नहीं कहा, तो आप बस वहाँ पे calculations करके आप directly answer लिख सकते हो. It's just 1 mark. तो अब यहाँ पे क्या करोगे? You say CE is the diameter, right? CE आपका diameter है. This is your diameter. तो ये जो circumference पे angle बनाएगा, that's going to be 90. If that angle is 90, that means इसमें ये part x था, तो बाकी कितना बचा? The rest is 90 minus x. ठीक है? ये 90 minus x हो गया. आपको क्या चाहिए था? आपको dcy ये वाला angle चाहिए था. अभी ऊपर वाला angle और ये नीचे वाला angle they're actually equal. हमने पहले भी prove किया था. Since these are radii, ये भी radius है, ये भी radius है, तो इनके opposite angles हैं, वो equal होंगे. So if that is 90 minus x, this should also be 90 minus x. यहाँ पे लिख देंगे dcy therefore is 90 degrees minus x. Okay. Then it says bxa. bxa. Let's go on the figure and figure out where is that. bxa. bxa. So that's this angle here. ये angle find करने आ गया. ठीक है? अच्छा. Now again, हमने पता है कि 90 minus x है. ठीक है? हमने पहले पार्ट में क्या प्रूव किया? This is 90 minus x and this is also 90 minus x. ये भी उसके इक्वल है. ये भी 90 minus x है. अगर वो 90 minus x है तो ये भी 90 minus x है. ठीक है? ये दोनों आ गए आपके पास. अब ये तीसरा एंगल निकाल सकते हैं क्या? ये वाला एंगल. So let's find that angle. bxc. यहीं पे कर लेते हैं. Angle bxc ये फाइंड कर लें. ये क्या आता है? This is going to be 180. 180 में से ये दोनों एंगल्स माइनस कर दें. 90 minus x वाले 180 में से 90 minus x माइनस कर दें और इसमें से और 90 minus x माइनस कर दें. तो दोनों एंगल्स माइनस कर दिए. Let's see what we get from that. We get 180 minus 180 minus there's actually another way of doing that as well. That's quicker, but let's complete this now that we're doing it. So minus 90 plus x minus 90 plus x. ये हमारे पास आ जाता है 2x. Yes, this angle turns out to be 2x. ये जो बाकी एंगल बचा ये हमारे पास आ गया 2 times x. ठीक है? अगर ये 2x है इसका मतलब क्या है? axb क्या होएगा? axb is going to be 180 minus 2x. ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 था, उसमें से 2x माइनस कर दिया वो वाला, you get this thing. Another possibility for it, there's another quick way that I just figured out, could also be done. So circles में आपके पास अक्सर इसी तरह होते हैं. You've got multiple pathways, multiple ways of doing the same thing. यहाँ पे एक तरीका ये भी हो सकता था. So you say that these are vertically opposite angles. ये 90 minus x है, ये भी 90 minus x है. ये तो हमने figure out कर लिया. ठीक है? This is also 90 minus x. Now you could look at this chord. अब ये chord देख लें. AB chord. AB. Look at this chord. Now this chord is making an angle on the circumference. That's 90 minus x. Right? ये chord यहाँ पे angle बना रही है circumference के ऊपर. ये angle. वही chord आपकी सेंटर पे एंगल बनाएगी.
that should be twice than that. उससे double होना चाहिए, right? तो ये वाला angle should be double of 90 minus x. तो आप क्या कहोगे? This angle BXA, it's 2 times 90 minus x, which turns out to be 180 minus 2x. So that's the quicker way of doing that. Okay? Because you know this 90 minus x, AB chord circumference for 90 minus x बना रहा है, तो center पे उसका double बनाएगा. Okay, which will be 180 minus 2x. Okay, given that BC is equal to 3.5 centimeters and CX is 3.2 and CD is 5.6 and the length of AE. So now we've got some information given about that circle. We've got some lengths given. हमें वो चीजें find करनी है जो उसने कहा हुआ है. So let's actually copy this over there. हम वहाँ पे copy कर लेते हैं. Let's see what we get. Okay, so now we are given some lengths there. BC is 3.5. BC is 3.5. Get rid of some of these things here. Let's actually do it the other way. What's the angles are in here? Okay, yeah. So what are we given? BC is 3.5, BC is 3.5, so this length is 3.5. Okay, this length is 3.5. CX is 3.2. Okay, CX 3.2 है तो ये भी 3.2 होएगा because ये भी radius है XB. This is also going to be 3.2. Right? So given this ने क्या कहा है? CD 5.6 है, CD is 5.6, this is 5.6. Find the length of AE. AE figure out करना है. Total length AE. A से लेकर E तक ये total find करनी है. ठीक है? अच्छा. So how do we do that? We have okay. So we have 3.2 here. ये radius है. तो ये बाकी यहाँ पे left side पे ये भी 3.2 ही होगा. So that's also 3.2. So that's something that we figured out. ठीक है? तो ये 3.2 तो add हो गया. अब दूसरा तो मसला ये है कि CY ये हमें नहीं पता कि radius कितना है. We don't know what that says. ठीक है? अब remember पहले part में हमने क्या किया था? हमने कहा था कि these two triangles are similar. This triangle here and this triangle here. These are similar triangles. This is what we proved in the first part. ये triangle is similar. ठीक है? इसका मतलब क्या होगा? इनके corresponding जो lengths हैं, they are going to be उनकी ratio जो है वो equal होगी corresponding lengths की. ठीक है? उसने क्या दिया हुआ था यहाँ पे? ने क्या prove किया था? BCX is similar to DCY. So BCX and DCY are similar. ठीक है? Now since they are similar, that means इनके जो ratios होंगी, that's BC over DC. That should be equal to XC divided by YC. Okay? ये हमारे पास ratios equal हैं. तो 3.5 over 5.6. इसको हम X कह लेते हैं. Let's call this X. 3. X तो हमारे पहले कहीं और भी use हुआ है. Let's call this something else. Let's say the radius R. So 3.5. That's BC divided by DC, that is 5.6. So ये ratio है, that should be equal to the other ratio there, 3.2 divided by that R. यहाँ से क्या होगा? हमारे पास वो radius आ जाएगा. ठीक है? Radius figure out कर लें, cross multiply. 3.5 times R is equal to 3.2 into 5.6, 3.2 into 5.6.
greater than 3.2 into 5.6, and then R turns out to be 3.2 into 5.6 divided by 3.5, और यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी. R turns out to be 5.12. ठीक है, रेडियस आ गया हमारे पास बड़े सर्कल का, that is 5.12. Now since this is 5.12, that means this length is also 5.12 because that's also the radius. तो AE क्या हो जाएगा फिर? That is just 3.2 multiplied by 2. Right? So 2 into 3.2 plus 2 into 5.12. And that will give you the total length. That turns out to be 16.74 for me. 16.64 centimeters. So that's 16.6 centimeters to three significant figures. If not right, 4 there at 16.64. That is the length that we get. Okay. Is this clear? Any issues? Any problems? Because that was the last question here, and we're done with this paper. Okay, let me know if there are any problems, any further questions on this. You clear? Okay, so how did we find BXA? Okay, BXA. BXA, क्या था? BXA. Okay, how did we find this angle? Okay, so that's here. BXA. So remember that rule, that circle property that we have. Angle at center is 2 times the angle at circumference. If there's a same chord or same arc that is making an angle at the center and it's also making an angle at the circumference, तो उनमें क्या relationship होता है? Angle at center is twice the angle at circumference. So we're basically considering this chord here, the chord AB. Now this chord AB is making 2 angles. One angle is being made at the circumference, that's this angle. That's 90 minus x. ठीक है? अब यही chord center पे एक angle बना रही है. That's this angle. So the center वाला angle होगा, that will be twice the angle at the circumference. Right? That's a circle property that we know of. We just multiply 90 minus x by 2. So 2 से multiply कर देते हैं. That's 2 into 90 minus x. That's 180 minus 2x. Okay. Okay, good. Anything else? Any other part from this? Okay, good. All right. So we end it here then. In the next session, we are going to do, in fact, on Monday, we will be doing the next topic that will most likely be graphs of functions. वो Monday को cover करेंगे, फिर Tuesday को we'll do some practice questions on that. And then Thursday को inshallah we will be doing May-June 2018 का paper 2. Okay? So that's it for today then. I will post on the WhatsApp group as well about the class on Monday. That will be on noon. Noon के ऊपर उसी group के अंदर class होगी. That is going to be on graphs of functions. Okay? So I'll see you there then. And we stop here for today. Okay? If there are no further questions, I'm just going to end it here. Allah Hafiz, and see you again on Monday, inshallah. Allah Hafiz.